हेलो एवरीवन एंड आई एम बैक विद अनदर ट्रिक जो मुझे फिर से मेरे एग्ज़ाम के पढ़ते टाइम मुझे डिराइव करनी पड़ी, सोचनी पड़ी, बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू रिमेंबर इट। नाउ करना क्या है, डेल्टा टू वाई या वाई टू डेल्टा कन्वर्जन सीखना है हमको, ठीक है। इसका फॉर्मूला हमको याद करना है। फॉर्मूला इज़ एक्चुअली दिस फॉर दिस फिगर। फाइन, अब हमको ये याद करना है, ठीक है। तो विल स्टार्ट। पहले तो देखो, तुम ट्रायंगल बनाते हो, 9th 10th में कभी ट्रायंगल बनाया हो तो उसका नेमिंग कैसे करते थे? ए बी सी करते थे कि 1 2 3 करते थे? वेल मेरे यहाँ पे ए बी सी करते थे एंड दैट्स व्हाट हर जगह होता है। फाइन, तुमने नेमिंग कर ली ट्रायंगल की ए बी सी, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके सामने वाले जो रेजिस्टेंसेज हैं वो आर ए आर बी आर सी होंगे। इधर देखो, ए बी सी से तुमने नेम किया। अब ए के सामने वाला आर ए होगा, बी के सामने वाला आर बी और सी के सामने वाला आर सी होगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, जो यहाँ पे R1 R2 R3 की पोजिशनिंग होगा वुड बी लाइक दिस। ए के सामने ए बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट लेटर would be R1, for B it is R2 and for C it is R3. This thing you have to remember how, कि पहला तो देखो ट्रायंगल तुम्हारा ABC नाम से होगा, देन इसके सामने वाला RA होगा, ओके। एंड 1 2 3 यू हैव टू रिमेंबर लाइक दिस कि A का रिस्पॉन्स टू 1, B का रिस्पॉन्स टू 2, C का रिस्पॉन्स टू 3, ओके। नेक्स्ट you have to write this thing 1A, this thing you have to remember, okay, 1A. This thing if you'll remember, then you can write like this: R1 equal to something upon sigma R equal to this upon this. When I'll be telling you in the flow, तब समझ में अच्छे से आ जाएगा सारा, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, इधर जहाँ पे देखिए इसके सामने अगर कुछ है, लाइक इसके सामने हमको पेयर बनाना है न्यूमरेटर का, ठीक है। इधर भी हमको पेयर बनाना है, ठीक है। तो R1 का पेयर क्या बनेगा? अज्यूमिंग 1 करस्पॉन्ड्स टू A, यहाँ पे हमारा क्या बनेगा? RB, यहाँ बनेगा RC। यहाँ अगर RA है तो इसको पेयर बनाना होगा तुमको, तो R2 और R3 लिखना पड़ेगा। वाई R2 एंड R3? भाई जब तुम्हें RA निकालना है, यू वोंट बी पुटिंग हियर RB एंड RC, राइट? और वुड यू बी? यू वुड नॉट, बिकॉज अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमको ये 3 पता होगा तो ये 2 निकाल रहे होंगे, अगर ये 3 पता होगा तो ये 3 निकाल रहे होंगे, राइट? तो पेयर बनाने के लिए वील टेक द अदर हाफ, लाइक डिजिट्स हैं तो यू विल बी टेकिंग द अल्फ़ाबेट्स, इफ अल्फ़ाबेट्स आर गिवन यू विल बी टेकिंग द डिजिट्स. Next you made the pairs here, and whichever thing is remaining, basically the denominator, that you will be writing as the same, like 1 corresponds to A, okay. So you will write A here, RA. Fine, RA corresponds to what in numerals? R1. Fine, this thing you wrote like form pairs, and this is how you get the formula. Okay, now I'll be telling you from the start, like just a quick revision. Fine, so this thing started as you made a triangle ABC, okay, and the distances here are there with this one being the RC, this one being RA, and this one being RB and RA. Fine, in the middle there would be resistances like this one, RA corresponding to R1, R2 and R3. Okay, if you're not visible there, you can see it here. Fine, this is what you made. Next you will be writing like this. You will do like this. 1A I told you to remember, right? So R equal to R1 RA you will write stepwise. Then dinner, and this one would be like this. Fine, like remember it like say it is in a box, okay. Sigma has to be just one above the other, right? You will be writing like this. Like, isn't it easy to remember this thing? I hope it is. So next you will be forming the pairs. How will you form the pairs? RB and RC here and RA here, because this corresponds to the same thing. Next you will be writing R2 and R3 here, and here R1, okay. Well, if you're still confused, I'd suggest you rewatching the video. And what does this thing mean? Sigma means if sigma RA is written, I hope you already know this, but okay, I'll be telling again. RB and RC, basically the same kind of terms would be added, okay. If sigma RA is written, it means that RA plus RB plus RC is there. And say if sigma R2 R3 is written, it means that you have to write all the things in the same form which are possible. So R1 R2 plus R2 R3 and R3 R1 would be written here. So that's what you will be placing in here. Fine. Similarly for R2 here, you will be writing what? Basically you get this thing, right? R1 you get it. Fine.
Likewise, you will be writing for R2 and R3, and likewise for RA, with this pattern, you will be writing RA, RB, and RC. Fine. I hope you got the whole thing. Now you may take a screenshot. Screenshot. Well, that's it. Thanks. Bye.